Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel. I've got the hair tutorial for this look that I posted a few days ago. So I'm starting off by sectioning the hair off and I'm going to work with this back section. यहाँ पे मैंने sectioning कर लिया and ये काफ़ी simple सा hair style था लेकिन अच्छा लग रहा था. So इसका तरीका मैं आपको सबको बताती हूँ. ये जो section है मैं ऊपर इसको out of the way pin कर दूँगी and यहाँ से ये जो section है इसको मैं एक ponytail में बांध दूँगी. So I've just got rid of the sectioning, and what I'm doing here is I'm just going to pop this into a ponytail. So this one was done without any hair pieces, but I did use a very small amount of padding for this hair piece. So I've got it in a ponytail and then I've just got a little bit of padding and I'm just going to add this on just above the ponytail. So यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी मैंने पैडिंग इस्तेमाल की है, जस्ट थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाए जब मैं बैक सेक्शन करूँगी, लेकिन यहाँ पे इस लुक में मैंने कोई हेयर पीसेस नहीं इस्तेमाल किए. सो ये जो टॉप सेक्शन है इसको मैं दो हिस्से में कर दूंगी एंड इसकी बैक कोमिंग करूंगी एंड इसको पीछे की तरफ लेके आना है. सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जैसे वॉल्यूम वाला बुफॉन्ट में करी थी, दो सेक्शन करके एंड देन इसको एक एक करके बैक कोमिंग कर दूंगी एंड देन मोल्ड करके पीछे पिन कर दूंगी. So I'm separating this section off into two sections now horizontally, and then what I'm going to do is actually back comb this. So I'm creating a really big bouffant, so not just a puff at the back or anything like that, but quite a big, like, obviously you don't have to do it this puffy, you can, bring it down, but it's just what I decided to do on this day. So what I'm doing is I'm just using my texturizing powder, combing through, add a bit of hairspray afterwards, and I'm just back combing on the this section here, and then I'm going to bring over the top section, again back comb that as well. So थोड़ा सा टेक्सचराइजिंग पाउडर जो भी आपको मिलता है, मेरे ख्याल मेरा था VO5 का जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, कोई नया ढूंढ रही हूँ लेकिन अभी तक मिला नहीं है. फर्म होल्ड हेयर स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, आई थिंक इट्स नंबर 6 ट्रेसेमे का. So this is the top section again. I'm back combing. Because I'm back combing, what you have to do is you're back combing until you can't move your comb down too much more. So here I needed a bit more extra back combing. I just wanted to fall a little bit higher. And you can see I'm holding the hair quite high as well when I'm back combing. I'm not bringing it backwards and doing it. I'm keeping it quite straight. So back combing, अब यहाँ देखिए कि काफ़ी मुझे वॉल्यूम चाहिए थी, तो सीधा उठा के तो इनको मैं बैक कोम कर रही हूँ कि वॉल्यूम मुझे ज़्यादा आ जाए. So यहाँ पे very lightly आपने कोम के साथ इसको ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको स्मूथ कर देना. So very lightly I'm taking the same comb and I'm just smoothing over the top section, splitting it into two, and I'm just going to pin it together now. So when you're smoothing it over, you want to make sure you're not running your comb through the whole hair, it's just the top section. तो यहाँ पे मैं इसको बैक कोमिंग कर दिया, स्मूथ कर रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता इसकी थोड़ी सी वॉल्यूम और ज़्यादा लेके आ रही हूँ, स्मूथ की जा रही हूँ साथ साथ, एंड देन इसकी पिनिंग कर दूँगी. तो यहाँ पे आपकी अपनी मर्ज़ी है कि कितना आपको बड़ा चाहिए, कम चाहिए. मैं ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा कर रही थी इस दफ़ा. So I'm just using some U-pins here and I'm just pinning this in. So it's important when you're doing this kind of styling is normally have your model or whoever you're doing in front of a mirror so you can see that it's forming nicely and it's framing the face nicely and it's, it's not wonky and things like that. So I'm just pulling it out the hair a little bit as well, and now I'm just adding in my tikka. So again I'm just going over with two pins. Because I haven't done my final sectioning that's going to go over, I put the tikka in first, so the pins I'm just going to cross over at the top and then I'm going to cover it with the rest of the hair. So यहाँ पे जो फाइनल सेक्शन है जो ऊपर जाएगा पफ पे, वो मैंने अभी तक नहीं किया हुआ. सो यहाँ पे मैंने टिक्का लगा दिया, दो पिन्स करके क्रॉस कर दिए. यहाँ पे जो टॉप सेक्शन है अभी इसको फिर स्प्लिट करके तो पीछे की तरफ बैक कोमिंग करके तो इसको कवर कर दूँगी. So you want to, that gap that you can see, that's the gap that you have to try and get rid of. So when I'm back combing, I make sure that when I'm back combing, I back comb that middle section properly so that there's no gaps when I actually bring it back. And then when you're smoothing over, you have to kind of like, instead of going straight back, you'll see me in a few seconds where when I bring it backwards, I kind of like bring it back at an angle so it actually crosses over so you can't see any gap where the tikka went in.
So again, I'm just spreading it out, and then I'm going to start back, going over and smoothing it out, and then I'm going to adjust it into the hairstyle. So यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता इसको स्मूथ कर रही हूँ कोम के साथ, एंड देन इसकी शेप थोड़ी सी लेके आ रही हूँ, एंड जिधर जिधर मुझे जैसे बाल चाहिए, जिधर थोड़ा सा फ्लैट लग रहा है, वहाँ पे ऑब्वियसली अपने कोम के साथ उसको पुल कर रही हूँ, एंड यहाँ पे जो वो गैप होता है ना टिक्के का, वो उसको भी कवर कर रही हूँ साथ साथ. So I'm smoothing it over before I actually hairspray it properly. So then I go over with a little bit of hairspray. And I don't go in, this is a slightly less stronger hairspray, so it's like a medium hold one. So I'll go in with that first, and then I'll go in with my, firm hold hairspray afterwards, once I know that I've got it set properly. So now what I'm doing is just taking the rest of the sectioning of the hair, and I'm back combing it backwards into the hairstyle again. So I wanted this a bit more wider, so you can see I'm standing to the side of her now, and I'm not back combing backwards, I'm actually back combing to the side, smoothing it over, and then I'm going to mold it and take it backwards, if that makes sense. तो यहाँ पे जो आगे वाले हेयर है, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा मुझे 1-2 बिट्स चाहिए थे जहाँ पे उनको कर्ल कर दूँगी, बाकी का सारा मैं पीछे की तरफ लेके जा रही हूँ. लेकिन मैं साइड पे खड़ी होगी तो इसका एंगल देखें कि मैं बैक कोमिंग कैसे कर रही हूँ, एंड देन पीछे लेके जाऊँगी. ऑब्वियसली यही सेम हेयर स्टाइल आप कुछ और तरीके से भी कर सकते हैं, उसकी थोड़ी सी डिफरेंट लुक आ जाएगी. सो बस आप टेक्निक्स पे यहाँ पे देखिए, एंड देन इंशाल्लाह आप अपने पसंद का हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं. So I'm just deciding on what I wanted to leave out. So then I take it back, and see, obviously you could have obviously pulled this back and taken it over to the side. So, but like I said, I was just doing something a little bit different. So I've kept it quite low, covering the ears a little bit, and then I'm just gonna shape it properly in a few seconds. So same on the other side. Again, back combing and taking the sections backwards. आप ये टेक्सचराइजिंग पाउडर के बगैर भी कर सकते हैं, हेयर स्प्रे लगा के बैक कोमिंग कर सकते हैं, लेकिन जो पाउडर होता है ना, उससे आपकी थोड़ी सी ग्रिप आ जाती है, तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है. So now that I've pinned it, I'm just obviously making sure that it's level, puffing out wherever I need to, because I didn't have a mirror in front of me, so I had to keep coming in front of her and making sure that it looked right. So the back section, all I'm going to do is basically comb through a little bit, keep an eye on the way I pin. So what I do is I actually drag a piece of hair out, stick my pin in, and then fold it inwards, and then I tuck the pin away, so the pin actually gets hidden. So there are a few ways of doing this pinning. So you can see I'm just putting my pin in, I pull it out a little bit, and then I'll just stick the pin in, and then the ends you can actually just get rid of the same way as well. You'll see I'll do this throughout, and I just wanted a small messy thing happening to the side because I'm going to add some flowers as well. So यहाँ पे मैं हेयर स्प्रे थोड़ा सा लगा के इसको कुछ खास स्मूथ नहीं किया, कुछ खास बैक कोमिंग भी नहीं करी. आप ध्यान देखें कि मैं पिनिंग कैसे कर रही हूँ. पिन लगा के जो ग्रिप होता है, फिर उसको थोड़ा सा पुल करूँगी, आप देख लें यहाँ पे, एंड देन इसको ट्विस्ट करके अनपिन कर दूँगी, एंड देन थोड़े थोड़े ये ऐसे बाल थोड़े से बस निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रफ सा हेयर स्टाइल चाहिए था. पिन को मैंने पकड़ा हुआ क्योंकि कई दफ़ा ढीला हो जाता है, वहाँ पे एक और लगा दूँगी, एंड बाकी के जो बाल है इसी तरीके से मैं कर रही हूँ. काफ़ी रफ सा लो सा साइड पे मुझे बन चाहिए था, क्योंकि एक साइड पे मैंने फूल लगाने थे. So I just go through, and the reason I had the padding was it helped with just the placement of the lower bun, so it's just giving me that extra volume. So all the ends I'm doing the same. So what I'm doing is popping my grip in, pulling it out a little bit, twisting it, and it goes in, and then your pin gets hidden as well. So I just keep doing this to the rest of the hair, placing it where I think it looks right, hiding the little bits of hair and the pins, and then I'm going to add some flowers. So once I've done this bit, I'm going to go over, smooth it over again, check from the front whether it's level and things like that. So ये जब आपने सारा कुछ कर लिया, फिर देन आपने फिर सारे जो ऊपर से जो स्मूथिंग करनी है, जहाँ पे आपने अगर थोड़ा सा सही करना है, उसको पुल आउट करना है, वो सारा कुछ कर लें, एंड देन आपका हेयर स्टाइल फिनिश हो जाएगा नीली.
You could use like a smoothing serum here if you wanted a really smooth hairstyle. So that's like a good way of getting it smoothed out as well. तो यहाँ पे अगर चाहे तो यहाँ पे एक स्मूथिंग सेरम भी यूज़ कर सकते हैं इन बालों पे कि ज़्यादा मतलब स्मूथ सा हेयर स्टाइल आया लेकिन obviously मैं वो नहीं कर रही थी. So you're just filling out all the gaps and things like that. So what I do is I just add hairspray and I pull it a little bit as well and set it because this is the stronghold hairspray and then it kind of like just stays there. So you could have done this right in the middle as well. So it's just I've added flower so I just kept a little bit of a gap there. So आप ये हेयर स्टाइल ऑब्वियसली मिडल में भी बिल्कुल कर सकते थे कि बिल्कुल बॉटम पे पीछे आ जाए लेकिन मैंने साइड पे बस फूल ऐड कर दिए थे आगे से थोड़ा सा स्ट्रेटनेस के साथ कर्ल कर दिया था बालों को एंड फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको थोड़ा सा नीट करके फिनिश कर दिया था. So I hope आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है. ऐसे और साथ साथ लेके आती रहूँगी. कोशिश कर रही हूँ कि obviously हेयर स्टाइल्स जिनके जहाँ पे मैं हेयर पैडिंग से यूज़ करती हूँ या है वो जो एक्सटेंशन होते हैं वो नहीं यूज़ करती तो उस टाइप के भी हेयर स्टाइल्स आपके लिए लेके आऊँ. आगे थोड़े से जो हेयर डॉल है उसके ऊपर ज़्यादा आपके लिए हेयर स्टाइल्स भी लेके आऊँगी. मैं ज़्यादा फिर आपको सिखा सकती हूँ. So this was pretty much the full look. I hope you've enjoyed this video. I am trying to bring you lots of new hairstyles as well. I will be doing quite a few on my mannequin just because it's easier for me to do and get out more hairstyles for you. So I hope you've enjoyed this. If you have, give me a thumbs up, leave me a comment, and I will hopefully see you guys soon. Allah Hafiz.